Greetings of the day to everyone. Me, Mrs. Muskan Kharpani, your science faculty, is going to start a new topic for class 6, chapter 2, components of food. So, in previous videos we have discussed about carbohydrates, proteins and fats. Today we are going to start with vitamins. Vitamins are the protective food and they are required in small amount. So there is not any one type of vitamin that our body requires. So many type of vitamins are there. So we'll discuss in detail about them. So let's start with vitamins. Vitamin. So as we all know that vitamins are also important component of our body, right? They are called protective food. They are known as protective food, as carbohydrate and fats are known as energy giving food. Vitamins are known as protective food. Why? Because they protect our body and from different microorganisms, from different diseases, and that's why food which are rich in vitamin, they are known as protective food. Okay, so there is not any one type of vitamin. So many types of vitamins are there. Vitamin A is also there, vitamin B is also there. Vitamin B, so many types of vitamin B's are there, so you can call it B complex. Okay, and vitamin A, vitamin B complex, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. So many types of vitamins are present, and each and every type of vitamin is having its own function. Vitamins are essential nutrients which are required इन स्मॉल क्वांटिटीज. बहुत कम चाहिए होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. एंड हर एक टाइप का विटामिन जो होता है वो पर्टिकुलर टाइप के फूड के अंदर मिलता है, राइट? और स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सो एवरी विटामिन इज हैविंग इट्स स्पेसिफिक फंक्शन and its deficiency may lead to diseases. Okay, and if I talk about vitamin B complex, it is a group of vitamins that contain vitamin B1, vitamin B2, vitamin B4 and vitamin B12. All right, vitamins help us to protect our body against diseases. As I have told you, they are also known as protective food. Okay, the food which is rich in vitamin, that is called protective food. All right, तो अलग अलग टाइप के विटामिन्स मैंने अभी आपको बात किया है ना, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, आईज, बोन्स, टीथ्स, गम्स, etc. So this picture shows you the different types of vitamins which are present around. Now we are going to discuss about the different sources and functions of each vitamin which are given in this table. So as we are able to see over here, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 and vitamin B4 first we will discuss. So if I talk about vitamin A and vitamin B12, vitamin C, vitamin D and vitamin E. So vitamin A, what is the source of vitamin A? The source is green leafy vegetables, carrots, fish liver oil, butter, eggs, mango, etc. And what is its function? It maintains the healthy eyesight, proper growth. Okay, this is butter is also the source for vitamin A. ओके, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन? हेल्दी आई साइट के लिए, है ना, ज़रूरी होता है. हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी होता है. ओके, प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. इज़ दैट क्लियर? व्हाट इज़ द सोर्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए? ऑल राइट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट विटामिन B1.
B1. First of all, what is the source for vitamin B1? होल ग्रेन्स, है ना. इसके अलावा सीरियल्स हो गए, यीस्ट हो गए, नट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, राइट. ऑल दीज आर द sources of vitamin B1. Now, what is the function of vitamin B1? It helps in proper functioning of the digestive system, heart, nerves or muscles, right? What is the function of vitamin B1? किस में हेल्प करता है? आपके digestive system को proper function करने में, heart को, nerves को and muscles को. Alright? Now next is vitamin B2. Vitamin B2, what is the source for vitamin B2? Whole grain, green leafy vegetables, milk, meat. Okay, these are the all sources for that. Okay, ये vitamin B2 का function आ गया, digestive system को proper रखना. So what is the sources I was telling you about vitamin B4? These are the green vegetables, meat, whole grains, yeast. Okay, this is for the vitamin B4. And what is the function? Healthy skin के लिए और digestive system के proper functioning के लिए ज़रूरी होता है, right? B2 and B4 दोनों ही digestive system के proper functioning में काम करते हैं. Alright? Now let's discuss for vitamin B2. 12. What is the source for vitamin B12? Milk, cheese, liver, fish, meat, eggs. All these are the sources. Okay, cheese is also the source for vitamin B12. Meat is also the source for that. Okay. So what is the function of this? Vitamin B12 red blood cell के formation में हेल्प करता है. आर यू गेटिंग? क्या करता है? दीज आर, क्या है ये? दीज आर द रेड ब्लड सेल्स एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी सेल्स के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है एंड पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, राइट. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विटामिन. ऑलराइट. Now, so this is proper use for proper growth. This is a function for vitamin B12. Now come to vitamin C. विटामिन का C का सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट जो होते हैं, आंवला, लेमन, ओके, ऑरेंजेस, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन वेजीज, all these are the sources. Are you able to see the citrus fruit over here? Right? The different citrus fruit are there. Mosmi. So all these are what? Ananas, pomegranates, okay, oranges. So all these are the sources of vitamin C. So what is the function of vitamin C? Necessary for keeping our teeth and gums healthy. It increases the resistance for our body to infection. है ना. इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है एंड डिजीज से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है. ओके, सो दिस इज़ द फंक्शन फॉर विटामिन सी. नाउ कम टू द विटामिन डी. विटामिन डी, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन डी? मिल्क, एग yolk, फिश लिवर ऑयल, बटर, right, fish. All these are the sources of vitamin D. Okay, but vitamin D is prepared in the body when the skin is exposed to sunlight. जब आपकी बॉडी को सनलाइट मिलती है तभी आपकी बॉडी में विटामिन डी बनना स्टार्ट होता है. सो कैन वी से दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ. व्हाट इज़ द फंक्शन? बोन्स एंड टीथ के नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है. ओके, विटामिन डी वी हैव टॉक्ड अबाउट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद विटामिन ई. व्हाट इज़ द सोर्स फॉर विटामिन ई? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर,
whole cereals, grains, vegetable oils, liver. Okay, so green veggies, these whole cereals, these are all the sources of vitamin E. What is the function of vitamin E? Now it is essential for normal functioning of muscle. आपके मांसपेशियों की, आपके मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है एंड आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है. ओके, आपके लिवर के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है. ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट with our next topic, that is minerals. We have discussed about different types of vitamins and their source and their function. Now we are going to start with minerals only. As we know that minerals are the nutrients which are required by our body for its proper functioning. हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनरल भी ज़रूरी होते हैं, हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए. ओके, क्या वे हमें एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरह? नो. फैट्स की तरह? नो. देन व्हाट इज़ देयर फंक्शन? So they are having their different functions. They are essential for the proper functioning of our body, for our normal growth. Okay, there are two types of minerals, macro minerals and trace minerals. So macro minerals, which are used in much larger amount, right, which are required in more, which are required more, and which are required less, these are called trace minerals. Okay, so they don't give any energy to our body. आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग. ओके, मिनरल्स आर नॉट रिक्वायर्ड अ लॉट इन आवर बॉडी. बहुत कम कम ही चाहिए होता है, रिक्वायर्ड इन टू स्मॉल अमाउंट, बट every mineral is required for the proper growth of the body. All of them are having their own functions. Okay, and they are responsible to maintain good health of us. Now let's discuss what are the sources and what are the functions of different types of minerals. And I have told you four are main over there: iron, calcium, phosphorus and iodine. तो source क्या है? green leafy vegetables, legumes, spinach, jaggery, liver, egg yolk, apple, groundnut, cereal, etc. ये सारे sources हैं. और function क्या क्या है? Essential for formation of hemoglobin in the red blood cells. Hemoglobin carries oxygen from the lungs to different body cells. है ना? I have told you already what is hemoglobin and what is its function when we talked about vitamin. So क्या function है? Essential for the formation of hemoglobin in the red blood cells. And hemoglobin carries oxygen. क्या करेगा हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा लंग्स से ले करके एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कैल्शियम. Calcium, everybody knows that calcium we need for our healthy teeth and healthy bones, right? So milk, cheese, eggs, green vegetables, whole grain, all these are the sources of calcium. And if I talk about its function, then obviously the hardening of bones, teeth, उनको strong बनाता है और important role play करता है in the clotting of blood also. Next is phosphorus. So what is the source for phosphorus? Milk, cheese, green vegetables, bajra, nut, liver, bananas, ragi, all these are the sources. And the function is obviously the formation of strong bones and teeth. The same function it is having, similarly like calcium. Okay, now come to the iodine. Iodine is we get from the sodium chloride, that is the normal salt that we used to eat in our
डेली डाइट इन आवर फूड, जो हम अपने खाने में खाते हैं. ओके. We get iodine from regular salt, and along with that we get it from seafood also, because seas also contain saline water. They are having a lot of salt in that. तो जो सी फूड होता है उसके अंदर भी सॉल्ट होता है. ठीक है. along with that green veggies and ginger, fish, etc. These are the sources of iodine. Now what is the function of iodine? ये थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रॉपरली काम करने में हेल्प करता है. थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? थायराइड ग्लैंड. वेयर दिस थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट? इन आवर थ्रोट रीजन, इन आवर नेक रीजन. ओके. what is the function of this hormone? It controls the physical, mental and the sexual development of the body. And if in its absence, we may get disease. So about diseases we will talk later on. Okay. So I hope all the minerals must be clear to you now, that what are their sources and what are their function. Our next topic is roughage, that we will discuss in our next topic. Thank you.